Hello students, I'm back again with my video lecture on new topic this time. This is human capital formation. मैंने previous lectures में आपको rural development के बारे में पूरा बता दिया. I had posted around 6 lectures on rural development, and here we will be starting with human capital formation today, and this is my lecture 1 on this particular topic. So let us just start. Before starting, just subscribe my YouTube channel for more updates on economics, more updates on BST and accountancy lectures. Recently, I'm posting economics lectures. Soon, I will be posting BST and accountancy on my channel. If you have any doubts, you can DM me on Instagram or on Facebook, and you can follow my Telegram channel. The link is given in the description. So let us start with the today's session. So students, let us start with the today's lecture. Okay. Now see, in this particular session, I'm only focusing on introduction. आप human capital formation क्या होता है? What are the sources of human capital formation? You must be knowing human capital कैसे बनते हैं? What we are. See, presently we are human resource. We are not continuing as a human capital until and unless we start earning. जैसे ही आप अर्निंग में आ जाते हो बेटा, तो आप कंसीडर किए जाते हो ह्यूमन कैपिटल फॉर द नेशन. टिल दैट टाइम यू आर ओनली द ह्यूमन रिसोर्स. जैसे एक टेक फॉर द एग्जांपल फिजिकल रिसोर्स जैसे होती हैं. टेक फॉर द एग्जांपल लैंड. अब लैंड को जब आप रेंट पे दे दोगे, and you will be start receiving that particular rent on monthly basis. तो लैंड पहले एक फिजिकल रिसोर्स था, लेकिन अब वो एक फिजिकल कैपिटल बन जाएगा, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग अर्निंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ लैंड. सिमिलरली ह्यूमन रिसोर्स भी वैसा ही है बेटा. ह्यूमन रिसोर्स इज द पर्टिकुलर रिसोर्स जिसको अभी अर्निंग सोर्स स्टार्ट नहीं हुआ है. अ स्टूडेंट इज स्टिल स्टडिंग इन क्लास 12. हिज अर्निंग सोर्स हैज नॉट बीन स्टार्टेड येट. बट जैसे ही वो 12th क्लियर हो जाता है, एमबीए क्लियर हो जाता है, नाउ ही गेट्स अ कन्फाइंड जॉब. नाउ ही हैज टर्न्ड आउट फ्रॉम अ ह्यूमन रिसोर्स टू अ ह्यूमन कैपिटल. ओके. until and unless you start earning, अगर आप पार्ट टाइम जॉब भी स्टार्ट करते हैं बेटा, then too you will be considered as the human capital. Now see, this is the human capital formation. ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है related to your human capital. And now how it is formed and how we are dealing with. Let us start with first basic question. What is economic growth? क्या होती है इकोनॉमी की ग्रोथ? क्या होगी as per you? What you are considering as your economic growth and how it is achieved? So simple, यहाँ पे अगर मैं definition बोलूँ बेटा, economic growth is economy's ability increased in terms of what? In terms of goods and services. An increase in economic ability compared to past period to produce goods and services in a larger scale. जहाँ पहले अपन मान के चलो जीडीपी अपना 10% था, तो अब जीडीपी 10% सपोज 12% हुआ, तो यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ शो होगी. बाय हाउ मच परसेंट? बाय 2%. योर इकोनॉमी हैज ग्रोन बाय 2%. 10% तो पहले से ही ग्रोथ था, लेकिन इस साल जो अपन ने ग्रोथ अचीव करा है वो 12% अचीव किया है. मतलब पास्ट पीरियड कंपैरिजन के कंपेयर करें, सो वी हैव इंक्रीज अवर आउटपुट बाय मोर 2%. ओके. सो इन दैट केस आपको समझना चाहिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. इट इज इकोनॉमीज एबिलिटी टू इंक्रीज व्हाट? द गुड्स एज वेल एज सर्विसेज. It can be determined by measuring the change in GDP of a country. बोल के रखा है what is GDP? GDP is gross domestic product. अपन नेशनल इनकम में इसके बारे में खूब पढ़ा हुआ है. You can also see my previous lectures on national income so that you will be able to get कि national income में क्या क्या changes आते हैं, क्या उसमें particularly benefit, particularly how you can solve the practicals of national income. All I have particularly posted in my YouTube channel. आप national income search करके आगे कपिल गोपलानी लिख लीजिए. You will be getting all the lectures of national income one by one. Okay. Now moving on to the economic growth that can be achieved. Now see here a good example is given. See physical resources को अपन ने किसमें convert किया? फिजिकल रिसोर्स को अपन ने कन्वर्ट किया फिजिकल कैपिटल में. जैसे मैंने आपको
इंट्रोडक्शन में बताया था। सपोज लैंड इज देयर, लैंड को आपने फिजिकल कैपिटल में कैसे कन्वर्ट किया? टू कन्वर्टेड दैट लैंड इनटू अ फैक्ट्री सेटअप। अब जाके वो फैक्ट्री बना, अब जाके वहां से इनकम बनना शुरू हुई। तो वो लैंड क्या बना? बिफोर इट वाज अ फिजिकल रिसोर्स, नाउ इट इज अ फिजिकल कैपिटल। सिमिलरली अगर मैं ह्यूमन रिसोर्स की बात करूं, सो ह्यूमन रिसोर्स जस्ट लाइक यू आर स्टूडेंट्स। Okay, now you will be converted into human capital once you get qualified. Suppose one of them you are going to be chartered accountant in future, one of them you will go be becoming company secretaries, आप MBA professionals बनेंगे. So whenever you are focusing on these particular sectors, तो जब आप earning source पे आओगे बेटा, from that particular point of view you will be considered as human capital because अब आपने earning source start कर दी है. Now you have started with the earning source. तो physical capital क्या है और human capital क्या है? Just let us see and then you will see the difference also. Physical capital is a tangible asset created by human which is used in production. It is machine. लैंड इज नॉट क्रिएटेड बट उसको अपन फिजिकल कैपिटल ही मानते हैं. इट इज पर्टिकुलरली नेचर्स गिफ्ट टू अस. लैंड इज, अब ना उसको हम बढ़ा सकते हैं ना उसे हम कम कर सकते हैं. ओके, सो दैट इज ओनली कंसिडर एज फिजिकल कैपिटल. मशीनरी जो पर्टिकुलरली हम बना रहे हैं, अदर पर्टिकुलरली, सो दीज ऑल आर कंसिडर एज फिजिकल कैपिटल. अब ह्यूमन कैपिटल क्या? ह्यूमन कैपिटल इज collective skills of knowledge of individual that can be used to create a economic value. मतलब आप इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट कर पाएंगे. किससे क्रिएट कर पाएंगे? विथ द हेल्प ऑफ द नॉलेज, विथ द हेल्प ऑफ योर स्किल्स, with the help of your core competencies. Take for the example, now I am a teacher. So I have the skills, I have the knowledge of the particular subject, and from that basis, I am earning in a school. So now I will be considered as human capital because I am applying that skills, I'm applying that knowledge, I'm applying that competencies in me to earn what? To earn a economic value or to earn a good ransom salary. So that is human capital formation. Is it clear बेटा? अभी अपन formation discuss करेंगे, but understand अभी you all are human resource until and unless you are not converting your knowledge and skills into a economic value. जैसे ही आप इकोनॉमिक वैल्यू में उसे कब कंसीडर करोगे, तो इन दैट केस यू विल बी कन्वर्टेड इनटू अ ह्यूमन कैपिटल. एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. आपको यहाँ तक इतना टफ लगा कोई सर? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. मीन्स फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल अगर आप समझ गए, so easily you can answer. Now let us understand what is the difference between physical capital and human capital. बेटा एक चीज याद रखना है, सीबीएसई ऑलवेज मेंशन दी बेसिस. सीबीएसई की मार्किंग स्कीम में बेसिस हमेशा मेंशन होता है. सो फर्स्ट, नेचर. फिजिकल टेंजिबल होता है, इट कैन बी इजीली सोल्ड. ह्यूमन रिसोर्स आर इंटेंजिबल, इट कैन नॉट बी सोल्ड इन मार्केट. क्योंकि आपकी स्किल्स हैं, आपकी पर्टिकुलरली कॉम्पिटेंसीज है, यू विल डिसाइड. सेकेंड, डेप्रिसिएशन विद पासेज ऑफ टाइम. ह्यूमन रिसोर्स में आपके फिजिकल कैपिटल में डेप्रिसिएशन लगता है तो उस अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है. डेप्रिसिएशन कैन बी रिड्यूस बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट. सी, अगर आप क्वालिफाइड हो गए, even if you are qualified, even if you are not investing sometimes for your education, for getting updates, तो फिर बेटा आपका जो ह्यूमन कैपिटल है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा. टेक फॉर द एग्जांपल, एक लॉयर पर्सन है, अब उसको यही नहीं पता है कि अब जीएसटी आ गया है, अब कोई नए लॉज आ चुके हैं, अब कुछ अदर गवर्नमेंट लेके आ रही है. तो भैया इफ यू आर नॉट नोइंग दैट नॉलेज, फिर आप कहेंगे ह्यूमन कैपिटल. To maintain your human competencies, to maintain your skills and knowledge, you have to keep investing on your education as well as on health. तो ही जाके आप अपना ह्यूमन कैपिटल रिटेन कर पाओगे. नेक्स्ट इज मोबिलिटी. मोर मोबाइल, बिकॉज फिजिकल कैपिटल को हम इजीली एक कंट्री से दूसरी कंट्री शिफ्ट कर सकते हैं. दैट इज, सपोज आई एम इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम चाइना, एक्सपोर्टिंग गुड्स टू अदर कंट्रीज. दैट इज less mobile between the countries as compared to physical capital. Okay, human capital इतना move नहीं करता है. It is the particularly chances of human capital if we want to move, क्योंकि बहुत सारी conditions होती हैं human capital की, whether they are suitable, whether they are working condition which is according to them is suitable or not.
तो अकॉर्डिंगली वो चेंज करना चाहें ना करना चाहें ये उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है। नाउ मूविंग ऑन टू दी सेपरेशन। फिजिकल कैपिटल को आप इजीली सेपरेट कर सकते हो फ्रॉम दी ओनर। सपोज आज मान के चलो मैं मशीन का ओनर हूँ, तो मेरे से मशीन कोई चोरी भी करके दे सकता है। एनीथिंग कैन हैपन। सपोज टेक फॉर द एग्जांपल दिस इज अ मोबाइल फोन। ना इसको मैं क्या मानूंगा, इसको मैं फिजिकल कैपिटल ही मानूंगा। कल अगर कोई इसे चुरा के लेके गया तो मेरे पास तो अभी फोन नहीं है, आई एम द ओनर, बट स्टिल आई कैन नॉट बी हैविंग द ओवरऑल राइट कि भैया सपोज एनीबडी हैज टेकन दैट फिजिकल कैपिटल, तो वो इजीली सेपरेट हो सकता है। बट ह्यूमन कैपिटल को आप सेपरेट नहीं कर सकते फ्रॉम द ओनर। भैया एक बार आपने सीख लिया ना वो सब चीजें, यू हैव अचीव दोस स्किल्स, यू हैव अचीव दोस कॉम्पिटेंसीज, यू हैव अचीव दोस पर्टिकुलरली नॉलेज। अब एक बार वो नॉलेज दिमाग में बैठ गया तो उसको कौन छीन सकता है। That is the major issue. Human capital cannot be separated from the owner, not at all, because वो skills हैं, वो knowledge है, वो competencies हैं जो कभी भी इंसान से नहीं जाएंगी, that will remain with that person throughout their life. फॉर्मेशन, इट कैन बी बिल्ड थ्रू इम्पोर्ट्स। हम इम्पोर्ट के थ्रू भी मंगा सकते हैं। सपोज आज कोई नई मशीनरी आ रही है चाइना में या दूसरी कंट्री में, तो वी विल बी इम्पोर्टिंग दैट फ्रॉम एनी ऑफ द कंट्री। यहाँ पे फॉर्मेशन इज टू बी डन थ्रू कॉन्शियस पॉलिसी फॉर्मुलेशन। आपको बहुत सारी पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ेंगी, तो जाके आपका ह्यूमन कैपिटल अच्छे से ग्रो हो सकता है। मे बी सपोज एजुकेशन में, मे बी सपोज हेल्थ सेक्टर्स में, maybe suppose particularly other policies which you have to form, and that basis you will be able to have a good human capital formation in your country। otherwise आप human capital नहीं form कर पाओगे अपनी country में। चलिए, now coming on to the main topic, human capital formation का मतलब क्या है। it refers to development of abilities and skills amongst the population of the country, and that can be achieved, कैसे अचीव कर सकते हैं, बाय इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस मोर ह्यूमन कैपिटल एंड आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ योर ह्यूमन रिसोर्स। मैंने वही बोला, आज अगर कंट्री के पास अच्छी खासी ह्यूमन रिसोर्स है, पर उस ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल तो बनाओ। The only difference between India and China that China is improvising, why, because उसकी ज्यादातर ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल में काम कर रही है। But in the Indian scenario, we are having more human resources, but we are not converting that human resource into human capital. आज सिनेरियो घर पे ही देख लीजिए। If your mother is as an educated, qualified lady, but still she is managing her house, तो उसे आप किस पे मानोगे? Is she being paid for that services? नहीं, अगर उसको हम पेमेंट नहीं दे रहे, so that lady will not be considered as a human capital. She is only a human resource. Your father is only earning member, so he will be considered as human capital, और कोई भी member human capital consider नहीं किया जाएगा। So you have to invest in human capital. You have to produce human capital out of what? Out of your human resource. So let us discuss what are the sources. कहाँ से आप ह्यूमन कैपिटल बना सकते हो, ठीक है। मतलब इन सब एक्टिविटी से आप ह्यूमन की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो, अपना कैपिटल बढ़ा सकते हो। एनी एक्टिविटी विच इंक्रीजेस द मैन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी इज सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। फर्स्ट, उसको हेल्थ पे फोकस करना पड़ेगा। सेकेंड है ट्रेनिंग, इट कैन बी ऑन द जॉब, इट कैन बी ऑफ द जॉब। Information is also having an investment in your human capital. M is migration. He can migrate to another country for getting good qualification. And last one is education. So these are how many sources? These are 5 sources. और इसका जो acronym है that is H time. So इसको बोल देते हैं healthy time या happy time. Whatever is your particularly factors you want. H time is the acronym which is being there. H is for health, T is for training, I is for information, M is for migration and E is for education. तो ये particularly क्या कहलाते हैं? These are the sources of human capital formation. Now let us understand these one by one. आपको बता ही दिया sources, that is health, training, information, M is for migration and E is for education. Now let us understand these sources one by one. पहला आता है health,
Okay, we know the productivity of a healthy person is more than a unhealthy person. क्या बोल रहा है कि भैया जो एक हेल्दी पर्सन है वो मेरे को ज्यादा आउटपुट दे जाएगा और एक अनहेल्दी पर्सन है वो मुझे कम आउटपुट दे जाएगा. हेल्थ कैन इम्प्रूव थ्रू प्रिवेंटिव मेडिसिन. वैक्सीनेशन हम करवाते ही हैं. वी हैव डन वैक्सीनेशन ऑफ पोलियो एंड अदर वैक्सीनेशंस. सेकेंड इज क्यूरेटिव मेडिसिन. मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस. मतलब सपोज यू आर सफरिंग फ्रॉम कफ एंड कोल्ड तो आप क्यूरेटिव मेडिसिन ले लेते हो. थर्ड इज सोशल मेडिसिन. स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी. बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन लगते हैं फॉर अदर वैक्सीनेशंस. जैसे अभी पैंडेमिक चल रहा है, सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू गो फॉर वैक्सीनेशन ऑफ कोरोना. नेक्स्ट इज provision of clean drinking water and good sanitation. That is a very important aspect from the health point of view. अगर आप ये चीजें नहीं रखोगे so you will not be a healthy person, and if you are a unhealthy person आउटपुट आपका कम हो जाएगा, और अगर आउटपुट कम हो जाएगा तो जीडीपी, एंड अल्टीमेटली अ हेल्दी पर्सन से क्या होगा, इट विल बी इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ अ हेल्दी लेबर फोर्स विच विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज व्हाट, जिससे ऑटोमेटिकली आपका जीडीपी ऑफ कंट्री will automatically increase. That is the major case of human capital formation. Is it clear, Bacha? So now second is training. Productivity of physical capital increases with the improvement in human capital. देखो ट्रेनिंग हम क्यों करवाते हैं? Why training is needed? So that जो अभी मेरे पास particularly employees आए हैं वो और competent हो जाए और स्किलफुल हो जाए. कुछ नई चीज आई है मार्केट में, उनको ये नॉलेज होना चाहिए. सो इन दैट केस आई नीड टू गिव देम अ स्पेसिफिक ट्रेनिंग. और इससे फायदा किसको होगा? ऑर्गेनाइजेशन को ही फायदा होगा, क्योंकि तुम्हारे एम्प्लॉइज ट्रेंड हो रहे हैं, तुम्हारे एम्प्लॉइज स्किलफुल हो रहे हैं. दैट इज द मेजर टास्क. Workers are trained in the firm itself under the supervision of skilled worker. That is your on the job. Workers are sent to off campus training. That is off the job training. हो सकता है बहुत बार कि हमें यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं मिलते हुए मुझे कहीं और जगह जाके ट्रेनिंग लेनी है. सो दैट इज ऑफ द जॉब. वर्कर्स आर सेंट टू द ऑफ कैंपस फॉर द ऑफ द जॉब. अब इसके बेनिफिट क्या है? इट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स बिकॉज वर्कर्स विल नाउ नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इन अ वेरी स्पेसिफिक मैनर. Second, it leads to increase in production and productivity. अल्टीमेटली जो एक्सपीरियंस पर्सन है, जो वेरी ट्रेन्ड पर्सन है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अ अनट्रेन्ड पर्सन और अ अनक्वालिफाइड पर्सन. सो इन दैट केस ट्रेनिंग इज मस्ट. चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो अदर पर्टिकुलर ह्यूमन रिसोर्स हैज टू बी ट्रेन्ड. दैट इज द मेजर इशू. इवन स्टूडेंट्स आर आल्सो नीड ट्रेनिंग, देन ओनली दे विल बी एबल टू परफॉर्म. देखो विदाउट ट्रेनिंग यू विल नॉट बी एबल टू गेट गुड स्कोर्स. अपन ट्रेनिंग देते ही, सपोज टेक फॉर द एग्जांपल प्री बोर्ड्स हम क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं? ताकि आप पहले से ही ट्रेंड हो जाओ कि मेन बोर्ड एग्जाम आप कैसे फेस करोगे. सो एवरी नाउ एंड एक्सपेक्ट ह्यूमन रिसोर्स ऑलवेज नीड अ ट्रेनिंग, देन दे विल गो फॉर अ फाइन. नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन. इट इन्वॉल्व्स अमाउंट स्पेंट ऑन सीकिंग इंफॉर्मेशन. खबरी या खबरी होंगी तो ही आपके लिए वैल्यू होगा. अबाउट लेबर मार्केट, व्हाट दे आर सेइंग इज इट इज अबाउट द लेबर मार्केट एंड अदर मार्केट्स. आप जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अपडेट रखोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है. डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. You will be able to get more skillful decisions. You will be able to get more particularly information regarding to that. Second is efficient utilization of the acquired human capital stock. जितना ज्यादा आप इंफॉर्मेशन गेन करते जाओगे बेटा, उससे जो आपका ह्यूमन कैपिटल स्टॉक है वो और इंक्रीज होता है. सी टेक फॉर द एग्जांपल, आप एक पर्सन के पास जाओ जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है और एक पर्सन के पास जाओ जिसके पास कम इंफॉर्मेशन है. हु विल चार्ज मोर? अ लेस इंफॉर्मेशन पर्सन और अ पर्सन हैविंग अ गुड इंफॉर्मेशन पर्टिकुलरली? ऑब्वियसली जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा चार्ज करेगा. ऑब्वियसली जिसके पास कम इंफॉर्मेशन है वो कम चार्ज करेगा. सो इन दैट केस उन्होंने पहले से उस इंफॉर्मेशन पे स्पेंड करके रखा है. दे हैव ऑलरेडी वर्कड ऑन देयर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और इसीलिए वो अपनी इंफॉर्मेशन पे वर्क कर चुके हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज माइग्रेशन. माइग्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा? People migrate from one place to another place, maybe in search of job, or what it is, maybe suppose good education qualification,
Technically qualified person migrate to other countries. Unemployed people from rural areas migrate to urban areas. ये तो चल ही रहा है, आपने लॉकडाउन में देखा ही था. Better earning in migrated place is more than increase in the cost due to migration. देखो खर्चा तो आएगा. आज अगर आपने सोचो कि भैया मैं चला जाऊं बॉम्बे and I will be settling there and will working, so बॉम्बे का खर्चा अलग. Similarly, if I'm going to out of India for getting a good particularly job, so वहाँ के expenditures अलग. So you have to invest. Then only you will migrate. Otherwise, बिना खर्चे के तो migration possible नहीं है. और reason ये है कि that you are getting more better opportunities, more knowledge, more income in that particular area. That's why you are going for the migration. अब बेटा इस concept को बोला जाता है brain drain. याद रखना what is the brain drain concept. I'm introducing you here. Term is brain drain. Suppose take for the example education आपने इंडिया से ली. I am a well qualified doctor. Just an example. पूरा अच्छा खासा डॉक्टर यहाँ पे हूँ, मैंने एजुकेशन यहाँ पे अच्छे खासे कॉलेजेस ऑफ इंडिया से ली. नाउ बीइंग अ डॉक्टर मुझे ऑफर आ गया यूएसए से टू ज्वाइन देयर हॉस्पिटल. तो मैंने कहा चलो ठीक है भैया, पैकेज अच्छा है, बहुत अच्छा खासा पैकेज है फ्रॉम इंडिया, लेट अस मूव टू यूएसए. सो qualified here, getting education here, and you are serving the foreign nations. That is the concept of brain drain. That when you are qualified and educated in your home country and you are not serving your home country, you are serving some another nation, then that is known as brain drain. आप highly qualified person है, you're a doctor. In that case, you're not serving your nations and you're serving the other nations only because of increase in income. Next, last one is education. Education speed up the development process as well as what? It speed ups your economic growth. क्या करती है education? Education speed up करती है आपकी development process as well as the economic growth. And it also develops the skills and education. Okay, see here reason skill of an educated person is more than an uneducated person. Development process definitely होगा. What are the benefit associated with education? First and foremost, it is giving higher earning capacity. Second, it helps in understanding the change taking place in the society. Next, what are the third benefit? It encourages innovation. And fourth is facilitation of new adoption of new technologies. So this is the particular sources of human capital formation. I will be ending my lecture on this particular topic of the sources of human capital formation. Do see my new. Thank you students for listening to today's lecture. Do subscribe my YouTube channel for getting more updates on economic, BSc and accountancy as I told you. अगर आपको कोई भी doubts आ रहे हैं, you can just DM me on Instagram as well as on Facebook Messenger. Even Telegram channel link I have mentioned in my description. You can get for that particular case. Okay. Thank you students for listening to today's lecture.